Hello everyone, welcome to the official channel of Genex Academy. So आजिरो वीडियो होची हमरो important reports and the organization जोड़ा आपनकर OS prelims पाइंस बहुत helpful. आपन जो OS prelims अच्छी जोड़ा संडे दिन ता पे important reports and organizations रो बहुत सारा like आपनकर केमती theme कोन सेमानक इंडिया रैंक कोन ताकु रिलेटेड बहुत सारा माने आपनकर कंटेंट रहउची जोथरे आपनकर लास्ट टाइम आगे कौन हुए ना आपनकर जेते भी माने रिपोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हुए तो यूजुअली से गोटे गोटे सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चंस पचार दिए बट एबर जहाँ पैटर्न अच्छी अपन जानते एबर पैटर्न रे आपनकर ईच गोटे स्टेटमेंट रो पुणे मल्टीपल स्टेटमेंट्स अच्छी एंड मल्टीपल स्टेटमेंट रे आपन ऑप्शंस करेक्ट करे पे दबो सेते ए वीडियो जो हमें बनेछु ए वीडियो रे आपनको हेल्पफुल हबो बिकॉज़ जस्ट हमें से गोटे रिपोर्ट रो पूरा डिटेल एनालिसिस देछु ताकि आपण जहाँ भी एग्जाम रे आपण प्रीलिम्स एग्जाम से आसीबो आपको इजी हबो सब जगह ऑप्शंस मन रखिया पई एंड सब जगह ऑप्शंस करिया पई ओके तो हमें स्टार्ट करियो आज फर्स्ट रो सो फर्स्ट स्टार्ट करियो हमें वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आपनकर इंडेक्स आपनकर रिपोर्ट दैट इज यूएन's मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सो याको रिलेटेड आपण मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आपण जो एमपीआई अछि एमपीआई रो क्वेश्चंस यूजुअली आपण प्रीलिम्स रे आसे एंड से लास्ट टाइम अपेक्षा माने लास्ट माने जो प्रीवियस इयर्स जो थिला सेतरे डायरेक्ट जो रैंक होतला ताको न पके कि सेतरे कोन करी ना स्टेटमेंट दिए तो हमें भी इन डिटेल स्टेटमेंट सब देखिबा तो फर्स्ट रे हला यूएन's मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तो यूएन's मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जोटा सेटा आपनकर दीटा ऑर्गेनाइजेशंस मिसिकी जॉइंटली पब्लिश करचंदी गोटे होचे UNDP that stands for United Nations Development Program and OPHI and another one is OPHI जोड़ा होचे आपनकर ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव तो आपनकर दीटा ऑर्गेनाइजेशन मिसिकी आपनकर एमपीआई ग्लोबल एमपीआई इंडेक्स आपनकर पब्लिश करचंदी तो सेमानकर ए रिपोर्ट रो ताहले मेन पर्पस कोन ना ए रिपोर्ट रो पर्पस होची पॉवर्टी मेजर करियो so all over the world see poverty measure karibo just to reflect ki multiple deprivations that poor people face in the areas of education jaha apn important sectors ach jaha apn important areas achi jemti apn education hala health hala and living standards so basically tinta apn jaha bhi dimensions achi education health or living standard ताकू नहीं कि जहाँ भी पुअर पीपल फेस करचंदी मल्टीपल डेप्रिवेशंस ताकू नहीं कि सी पॉवर्टी मेजर करची एंड सी एथरे मेंशन करची इफ ए हाउसहोल्ड इज deprived in 1/3 or more of these indicators it is considered multidimensionally poor जदि गोटे हाउसहोल्ड 1/3 जदि ए सब जगह भितरु 1/3 माने तीनटा जा इंडिकेटर जो अछंदी डायमेंशन समान को जदि 1/3 से कम माने 1/3 डिप्राइव्ड अछि ताले से मल्टी डायमेंशनली पुअर सो बेसिकली तार 10टा स्टैंडर्ड 10टा आपनकर बेसिस अछि तीनटा डायमेंशन गोटे हेल्थ गोटे एजुकेशन गोटे लिविंग स्टैंडर्ड एंड 10टा क्लासिफिकेशंस अछि जो हिसाब रे से इंडेक्स काढुची तो फर्स्ट रे कोन ना हेल्थ रे आपन दीटा जाउची गोटे होची न्यूट्रिशन और होची चाइल्ड मोर्टालिटी एंड आपन को सब गुडा डिटेल मन रखिया पड़िबो बिकॉज़ स्टेटमेंट वाइज रे किछि भी आंसर्स आसपने किछि ऑप्शंस आसपरे एजुकेशन पुणी जाउची ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस पुणी कुकिंग सैनिटेशन ड्रिंकिंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी हाउसिंग एंड एसेट सो तीनटा मेन इंपोर्टेंट डायमेंशंस से मेजर करची गोटे हेल्थ गोटे एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड जदि ए तीनटा स्टैंडर्ड भितर कोडी भी 1/3 डिप्रिवेशंस देखौची तल सेमानको मल्टी डायमेंशनली पुअर को होची तो जस्ट मेमोराइज कर देबे गोटे हला यूएनडीपी और ओपीएचआई पब्लिश करछि जॉइंटली एंड तीनटा डायमेंशन पब्लिश करछि ओके नेक्स्ट जिबा और भी डाटा टिके देखिबा सेथे कोन देछि ना अक्रॉस 112 कंट्रीज तो ता एनालिसिस रे 112 कंट्रीज रे 6.3 बिलियन पीपल जहाँ भी 6.3 बिलियन पीपल पॉपुलेशन अच्छी से 1.1 बिलियन पीपल मैंने अप्रोक्सीमेटली 18% सो फैक्चुअल डाटा ओएस से बहुत आसे सो आपको फैक्चुअल डाटा बहुत मन रखिया पड़िबो दैट इज 18.3% अराउंड 18.3% लिव इन एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी तो 5टा कंट्रीज अच्छी जो माने पॉवर्टी रे
माने those or the 5 countries, the people of the 5 countries are living in poverty. They are India, first होची India, Pakistan, Nigeria, Ethiopia and Democratic Republic of Congo. So a 5टा countries approximately 235 million मान जो 1.1 billion तो 235 million people a 5टा country belong करचंदी. India, Pakistan, Ethiopia, Nigeria and Democratic Republic of Congo. Okay, सेथिरो इंडिया रो जहाँ भी HDI अच्छी that is medium HDI अच्छी, बाकी समस्तंगर low HDI अच्छी, बाकी समस्तंगर low HDI अच्छी. Okay, and 2024 theme very important theme तो सब बोला ऐसे exam रे, that is poverty amid conflict. Poverty amid conflict. So UN's multi-dimensional poverty index, UN's multi-dimensional poverty index ने वो कई साली आपन की publish करची ना गोटे UNDP and OPHI publish करची जो joint publication तीनटा main dimension रे publish करची, that is आपनकर health, आपनकर education and आपनकर living standards. Same आपनकर 1.1 billion live poverty रहउचंदी. एथरो theme होची poverty amid conflict. Poverty amid conflict. Okay. Next. Next जिबा में second our important index आपनकर, that is Human Development Index or HDI. Human Development Index or HDI. So this is another important index. So आपको के release करची, आपको release करची आपनकर UNDP. आपको के release करची, आपको आपनकर UNDP release करची. तो एथरे जो UNDP release करची सेथरे एथरो इंडिया रैंक केते अछि ना, एथरे इंडिया रैंक अछि 134. So India rank केते अछि 134. Okay, so सबुठु टॉप पोजीशन रे के अछि स्विट्जरलैंड. सबु टॉप पोजीशन रे अछि स्विट्जरलैंड and first जो publish हेतिला एटा in the year 1990. In the year 1990. Okay, जे पुनी three basic dimensions रे analysis करूची. तीनटा basic dimension कोन ना, first हला long and healthy life, knowledge and decent standard of living. तो जेमती UN जो MPI रो जेमती अछि जेमती HDI रो भी तीनटा dimension अछि, गोटे long and healthy life, गोटे knowledge और गोटे decent standard of living. तार पुनी indicators long and healthy life केमिति जानिबे ना, life expectancy at birth, knowledge रो पुनी expected years of schooling, mean years of schooling, decent standard of living आपनरो GNI global national income आपण सेथरु जान परिबे, आपण सेथरु जान परिबे. ओके, तो तीनटा मेन डायमेंशंस रहिला एंड आपनरो तीनटा इंडिकेटर रहिला, आपनरो तीनटा नाही चारटा इंडिकेटर. तो बेसिकली एटा आपण एग्रीगेट बाहरे तीनटा मेन डायमेंशन तार पण चारटा इंडिकेटर तो आपनरो HDI कैलकुलेट करा जाय. सो दिस इज HDI रो आपनरो डाटा. ओके, नेक्स्ट आउरी पुनी कोन देछि देखि दबा. हां, ए टोटल ऑफ 193 कंट्रीज. सो आपनकर एनालिसिस टा 193 कंट्रीज रो हेछि, जोथरे इंडिया रैंक होछि 134 एंड स्विट्जरलैंड आपनकर फर्स्ट अछि, फॉलोड बाय नॉर्वे एंड आयरलैंड, फॉलोड बाय नॉर्वे एंड आयरलैंड. ओके, नेक्स्ट जिबा में आउरी डिटेल एनालिसिस देखिबा. तो मुझे कहली HDI is determined by aggregating the country score in 4 indicators and these indicators are complied into a single number between 0 and 1.0. तीनटा dimension and चारटा indicator. Okay, तीनटा dimension पुनी तारो चारटा indicator. So तारो theme कोन ना, what is the theme of HDR or HDI report जहाँ बाला HDI report रो, that is breaking the gridlock, reimagining cooperation in a polarized world. मन रखिबे UNDP रो जेमति थिला आपण poverty amid conflict, आरो सेमति अछि breaking the gridlock, reimagining cooperation in a polarized world, in a polarized world. तो India रो human development category India medium level रो अछि and between 1990 and 2022 the country saw 48.4% approximately आपण 0.434 रो 0.644 आपनगर improvement हेछि, आपनगर improvement HDI value रे हेछि. These are the data related to human development index. Okay, theme मन रखिबे, को organization publish करछा मन रखिबे, समान dimensions मन रखिबे and समान indicators मन रखिबे. ठीक अछि. नेक्स्ट जिबा
another one important, this is global gender gap report. गोटे बहुत बड़ important report आपनकर global gender gap report. तो एथिरे this is was in the news recently. Mumbai, India dropped to 129th place in the World Economic Forum's Global Gender Index 2024. 2024 रे India rank केते अछि ना 129. So index was first introduced in 2006. So index हमर first केबे introduce हेतला, index हमर first introduce हेतला 2006. तो के रिलीज करछि World Economic Forum, के रिलीज करछि World Economic Forum. Next कौन देछि ना components. तो what are the dimensions or what are the components जहाँ पर अपन global gender gap report आसे, these are the sub indexes or the components. What होछि economic participation, opportunity, educational attainment, health and survival, political empowerment. तो आपनकर economical participation, economical grounds देखा होछि, पुनी एजुकेशन बेसिस से तको करा होछि, पुनी हेल्थ एंड सर्वाइवल रेट करा होछि, एंड लास्ट होछि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट रो बेसिस रे आपनको ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आछि. ओके, नेक्स्ट दिबा. तो आपण मन रहिथिबो रैंक होछि 129 एंड आपनकर इंडेक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस हेतला 2006 रे एंड इट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ओके, नेक्स्ट आउ कोन डाटा देखियो आउ अछि, it aims to track changes in gender gap both over time and across countries. तो gender gap रे जहाँ जहाँ changes आसुची ताकू track करची आपनकर global gender gap report. Okay, the index focuses on gender gap, that is on the position of women relative to men. So it measures the index for around 146 country. तो 146 country रू आपनकर India rank अच्छी 129. India rank अच्छी 129. ओके, तो आपन कौन करे अच्छी ना प्रीलिम्स में आपन को एडा भी गोटे फैक्चुअल डाटा पर मन रखिया पड़िबो, बिकॉज़ लास्ट टाइम प्रीलिम्स एग्जाम रे जहां भी स्टेटमेंट बेस्ड आस्तिला बहुत माइन्यूट डिटेल्स रे आपन क्वेश्चंस पचारथिला. तो मे बी आपन को बहुत माइन्यूट डिटेल्स से पचार पारे. सो यू हैव टू मेमोराइज एवरीथिंग एंड यू हैव टू रिमेंबर कि हां ए स्टेटमेंट माने एता रैंक केते टोटल केतरा कंट्रीज एनालाइज हेतिला, तो से हिसाब रे आपन सब जगह मेमोराइज करिवे. सो next one dichi na Iceland remained the world's most gender equal society for the 15th consecutive year, followed by Finland, Norway, New Zealand and Sweden. Okay, so Iceland ta top position occupy korchi for the 15th consecutive year, followed by Finland, Norway, New Zealand and Sweden. Okay, next ba next हमारा IP index 2024. IP stands for intellectual property. अपन जानते हैं intellectual property rights अपन जहाँ भी अच्छी, that is based on अपन intangible items रो basis माने जहाँ भी तितर दिया ताकु related जहाँ भी law ताकु related जहाँ भी study, they are intellectual properties. तो basically जो intangible components गुड़ा का थान भी आपनकर intangible components रो ऊपर जहाँ भी होची ताकु से properties गुड़ा basically intellectual property कहा जाए. So intellectual property index जो अच्छी तब किए रिलीज करची ना US Chamber of Commerce अपना रिलीज करची intellectual property index जो थ्री इंडिया रैंक अच्छी 42. So India rank अच्छी 42 means India is very low आपनकर IP रो rule related. बाकी आपनकर जहाँ भी countries अच्छी important countries Russia, USA, UK से मानकर IP intellectual property field रे से मानकर progress अपेक्षा India progress भी कम अच्छी, that is 42 out of 55 countries. So India rank 42 अच्छी. So से कौन करची ना से report highlights the strength and weakness of India's IP landscape, indicating that USA, UK, France, Germany and Sweden are leading the pack. मुझे जमती कहली बाकी जहाँ भी developed countries अच्छी जमती USA, UK, France, Germany से मानकर जहाँ भी IP एरिया रे जहाँ भी आपनकर strength और weaknesses से मान comparison रे India रे strength और weaknesses analysis देची. So the index assesses the IP framework of world's top economies, among noting 20 economies showing significant improvement, while India's primary strengthening still lags behind the top performance. मुझे जोड़ा कहली.
कौन कहली ना जो टॉप इंपोर्टेंट इकोनॉमिकल कंट्रीज गुड़ाक अच्छा जो मैंने डेवलप्ड और डेवलपिंग अच्छा से अपेक्षा इंडिया रो आईटी एरिया रे आपण रिसर्च स्ट्रेंथ फ्रेमवर्क टा टिके वीक अच्छी इट इज स्टिल स्ट्रेंथनिंग बट स्टिल इट लैक्स बिहाइंड द टॉप परफॉर्मेंस ओके नेक्स्ट जीवा अनदर वन वेरी इंपोर्टेंट आपण CCPI इंडेक्स CCPI index okay CCPI index stands for climate change performance index so climate change performance index रो recent report आपनगर annual UN climate conference पाकु जोड़ा आपण अजरबैजान रो आपनगर सेरा जो आपनगर अजरबैजान जो कैपिटल सेथिरे आपण सेठी सेडा सो आपठी जो अजरबैजान कैपिटल बाकू जहाँ भी आप यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस अच्छी से आप CCPI रिपोर्ट आप पब्लिश कराइला एंड इट इज पब्लिश्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज थिंक टैंक्स गवर्नमेंट वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड ए क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल तो तीन ऑर्गेनाइजेशंस मिसिकी आपणकर CCPI इंडेक्स रिलीज करती इट ट्रैक्स द प्रोग्रेस ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एमिटर in terms of emission renewable and climate policy so कौन कौन climate policy है कौन कौन से माने renewable source of energy को switch करचंती से माने renewable source of energy को रा improvement किंदी करचंती किंदी use करचंती at same time केते amount of emissions होची अपन global अपन greenhouse gas emissions हो अपन global warming related से माने कौन policies होची ताकू track करेगी अपन CCPI index calculate करा जाए so CCPI looks at 4 categories जेमती कहली आपण चारटा कैटेगरी रे से आपणकर डिस्टिंग्विश माने आपणकर परफॉर्मेंस कैलकुलेट करे जेमती ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रिन्यूएबल एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी तो केते अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हला कौन कौन न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस रो आपणकर इंप्लीमेंटेशन होची को टाइप रो एनर्जी यूज होची एंड दैट को केते यूज होची एंड आपणकर कंट्री रो क्लाइमेट पॉलिसीज what are the climate policies to meet or to fight with the climatic conditions अपन climatic change रे अपन climatic change accordingly अपन कौन policies आंचंदी तो चारटा कैटेगरी रे अपन CCPI index calculate करा जाए ओके सो फर्स्ट सेकंड देची द टॉप परफॉर्मेंस फर्स्ट 3 रैंक्स वैकेंट तो फर्स्ट 3 रैंक माने अपन किछि भी गोटे भी कंट्री नाही जोड़ा वेरी हाई परफॉर्मेंस करछि गोटे भी कंट्री नाही तो अपन वेरी हाई परफॉर्मेंस करछि तो आपन डेनमार्क फोर्थ पोजीशन आछि फॉलोड बाय नेदरलैंड एंड यूके सो दैट वाज कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट यूजुअली से इमती दे पारे कि डेनमार्क आपन टॉप पोजीशन रे अछि CCPI इंडेक्स रे सो मन रखिबे CCPI इंडेक्स रे आपन फर्स्ट तीनटा रैंक वैकेंट अछि आपन डेनमार्क नेदरलैंड एंड यूके तापरे माने फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन रे आपन अछंती सो इंडिया रिसीव्स अ हाई रैंकिंग इन द GHG emissions and energy use category, medium in climate and low in renewable energy. Okay, so अपना renewable energy sources रो implementations अपना renewable energy source रो use तार proper use ये सब जिनस रे India is lacking behind and बाकी अपना climate policies रे टिके medium category perform करची and energy use of global house gas emissions रे the performance टिके high अच्छी the performance टिके high अच्छी okay. नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट आसिला आपनकर अनदर इंपोर्टेंट रिपोर्ट रिलेटेड टू आपनकर पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट दैट इज वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 so recently the IQ Air published the 6th annual world air report 2023 तो सेथरे कोन कहछि से सेथरे से कहछि आपनकर ओनली 7 कंट्रीज so it आपनकर published IQ Air आपण पब्लिश करछि आपनकर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट एंड आपनकर 7टा कंट्री ही अछंती जे आपनकर एयर पोल्यूशन गाइडलाइंस को फॉलो करछंती रिलेटेड टू PM 2.5 तो अपन जानते PM 2.5 दैट इज पार्टिकुलेट मैटर द साइज होची 2.5 माइक्रोन इन साइज और से एते माइन्यूट साइज
जे आपणकर सी इजिली आपणकर डीपली सी आपणकर लंग्स एगुड़ा को पेनिट्रेट करके बहुत सारा आपणकर सीवियर माने सीवियर डिजीज आपणकर करिपारे तो तार गाइडलाइंस को ओनली 17 कंट्री फॉलो करचंदी जोड़ा होचे ऑस्ट्रेलिया, इस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनाडा, आइसलैंड, मॉरिशस एंड न्यूजीलैंड. ओके, अकॉर्डिंग टू द World Air Quality Report, Delhi was identified as the city with the poorest air quality. So सबुठु poorest air quality Delhi रे आपनकर मिले. Next से केमती एनालिसिस करे? It includes data from 7182 locations in 134 countries, regions and territories. So around 134 countries रे आपन 7812 locations को नेकी से आपनकर एनालिसिस करे. So मुझे कहली तो PM 2.5 particular matter 2.5 concentration of 54.54 microorganisms per cubic meter. India has the third worst air quality. So India third worst air quality achi and India ro Delhi is identified as the poorest air quality. Okay, India was better than only two of its neighboring country, one is Bangladesh and one Pakistan. So dita neighboring countries ru dita hi neighboring countries bhalo perform karchi, that is perform to nai mane tike comparatively better achi, that is Bangladesh and Pakistan. Okay, so air pollution causes approximately 7 million premature death annually. So around 7 million premature death हुए annually and it contributes to 1 in every 9 death. So out of 9 गोटे death आपनकर हुए due to air pollution. So PM 2.5 exposure leads to health issues like asthma, cancer, stroke and mental health complications. So ये रहिला आपनकर World Air Quality Report 2023. Okay. Next another important जो आपन प्रिलिम्स में बहुत important, that is World Press Freedom Index 2024. तो देखि दवा कौन दिया है चित्रे. India's post in the World Press Freedom Index fell over the last year from 36.262 to 31.12 according to the recently published World Press Freedom Index. So India index टा आपनकर value रा 36.62 रू fell है कि 31.28 है जी. So ताको के release करची? That is an annual report released by the global media watchdog, that is Reporters Without Borders. से ऑर्गेनाइजेशन ना होची Reporters Without Borders जोड़ा आपनकर World Press Freedom Index आपनकर रिलीज करे. So see कौन तार एनालिसिस केमती हुए ना. The index ranks 180 countries. So total 180 countries को नेकी तार एनालिसिस हुए based on the ability of journalists to work and report freely and independently. So basically World Press Freedom Index रे आपण क्वालिटी ऑफ प्रेस आपण क्वालिटी ऑफ कंटेंट ताकू इंपोर्टेंस न दिया है कि आपनकर फ्रीडम माने रिपोर्टर्स की जर्नलिस्ट गुडा को केते फ्रीली और इंडिपेंडेंटली काम कर पारे ताकू फोकस करा जाए. ओके, सो द फ्रीडम क्वेश्चनर कवर्स 5 कैटेगरीज. सो पांचटा कैटेगरी रे आपनकर ताकू क्वेश्चनर ता जहा अछि ता करा जाए. पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल मैटर रे केते फ्रीडम रहे, लीगल फ्रेमवर्क रे केते फ्रीडम रहे, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट रे कौन रहे, सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट रे कौन रहे एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो कि नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड जहाँ भी हो सेथिरे केते फ्रीडम रहे से पांचटा इंपोर्टेंट कैटेगरीज रे ताको कैटेगराइज करा जाए. ओके, सो इंडिया's position has seen a slight improvement from 161 in 2023 to 159 among 180 countries in 2024. So data country रो improvement अच्छी, data position रो improvement अच्छी, that is 161 to 159. तो इम्प्रूवमेंट इज नॉट कि इंडिया परफॉर्मेंस बेटर हो जाइए बिकॉज ऊपर ऑलरेडी मेंशन है परफॉर्मेंस बेटर है बट दीटा कंट्री जेहेतु तल पोजिशन को पलि आसपे आपणकर इंडिया पोजिशन दीटा ऊपर को पड़े. सो इंडिया रिसेंट पोजिशन जो मन रखिए 159. ओके, it exclusively focuses on press freedom and does not evaluate the quality of journalism or broader human right violations within the country it assesses. मुझे भी कहली, it mainly focuses only on press freedom, independence
फ्रीडम फ्रीली आपण केमती कर पारिबे तापर फोकस करे क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म उपरे से एते इंपोर्टेंस दिएनी ओके सो इट्स अ थीम तार थीम होची शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट तो आर थीम हला शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट ओके नेक्स्ट बा आ गोटे important index. So this is corruption perception index. So corruption जहाँ भी the way the corruption is thriving across the world तो तार performance हिसाब रे गोटे index release हुए that is corruption perception index. So recently आपनकर Transparency International ये जो organization टा अच्छी सी गोटे इंडेक्स रिलीज करे दैट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो थ्री इंडिया रैंक होची 93 जो थ्री इंडिया रैंक होची 93 ओके द सीपीआई रैंक्स 180 कंट्रीज एंड टेरिटरीज अराउंड द ग्लोब बाय द परसीव्ड लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन सो पब्लिक सेक्टर करप्शन रिलेटेड जहाँ भी परसीव्ड लेवल आपनकर तांगर थिंकिंग अच्छी ताकू रिलेटेड आपनकर सी इंडेक्स रिलीज करे सो तर स्केल वेरी करे फ्रॉम 0 to 100 0 to 100 यदि तर स्केल 0 रहे दैट इज हाईली करप्ट एंड यदि 100 रहे ताले वेरी क्लीन माने करप्शन ऑलमोस्ट नील थाई करप्शन ऑलमोस्ट नील थाई सो न्यूजीलैंड सिंगापुर मेंटेन्स टॉप पोजीशन ग्लोबल इन करप्शन कंट्रोल सो न्यूजीलैंड एंड सिंगापुर रे आपण करप्शन कंट्रोल जहाँ भी आपणकर स्ट्रेटजी अच्छी ताल से टॉप पोजीशंस मेंटेन करची The bottom of the index include fragile states. तो जो fragile states जो से अपन authoritarian regimes चलची अपन जिम्मे नॉर्थ कोरिया हो अफगानिस्तान हो ये जो अपन authoritarian regimes चलची से जो fragile state गुड़ा गच्छन्दी से मानंगर in corruption level से मानंगर बहुत ही low अच्छी and से माने bottom positions occupy करचन्दी जिम्मे नॉर्थ कोरिया म्यांमार and अफगानिस्तान नॉर्थ कोरिया म्यांमार and अफगानिस्तान okay नेक्स्ट बा अनदर वेरी इंपोर्टेंट रिपोर्ट जो आपणकर यूजुअली आपणकर माने एनवायरनमेंट रिलेटेड रिपोर्ट तो आपण जानथिबे एनवायरनमेंट रिलेटेड आपण क्वेश्चंस एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड रिपोर्ट्स आपणकर जो करंट बेस्ड रिपोर्ट्स गुडा को बहुत इंपोर्टेंट थाए एंड यू ओएस रे प्रीलिम्स रे आपणकर एनवायरनमेंट इंपोर्टेंट टॉपिक जो सी बहुत डिटेल क्वेश्चंस पचारे एंड स्पेशल रिलेटेड टू आपणकर फॉरेस्ट एरिया ए गुडा this is state of world forest report 2024 so हम लिख देबा so it is published by the food and agriculture organization of the united nations so अपन food and agriculture organization जो FAO हची अपन united nations रो गोटे आपनकर एजेंसीज सी आपनकर ए रिपोर्ट ता रिलीज करे that is state of world's forest report. So according to the report, India ranked third for average annual net gain in forest area. So within a decade, माने decade तो नहीं within around 20 years रे India रो forest area रे annually net gain हेची. India रो forest area रे annually net gain हेची and India ranked third and India third rank occupy करची एमती annual net gain रे. Okay. So कौन देखिए deforestation rate सेटा भी मेंशन करची the deforestation rate declined to 10.2 million hectare per year in 2024 from 15.8 million in 2020 so a 10 years and a 5 years comparison रे से कहची 15.8 deforestation level रो से 10.2 deforestation level माने डिक्लाइन हेची ता माने हमर फॉरेस्ट एरिया रे इंक्रीज हेची फॉरेस्ट एरिया एंड इंडिया जोथरे थर्ड रैंक ऑक्युपाई करची ओके नेक्स्ट वन देची ना द रशियन फेडरेशन ब्राजील कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना टुगेदर अकाउंट फॉर 54% ऑफ द ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट तो अपन ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया सर नॉट रिपोर्ट अपन जो ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया अच्छी से 54%
माने ऑलमोस्ट मोर देन हाफ माने इक्वल टू मोर देन हाफ माने 54% आपनकर मेजर कंट्रीज माने आपण कंट्रीब्यूट करछन माने अच्छी से मानकर रशियन फेडरेशन, ब्राजील, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना. ओके, सो थीम फॉर दिस ईयर थीम कोन एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट सॉल्यूशन थ्रू इनोवेशंस, एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट सॉल्यूशंस थ्रू इनोवेशंस. तो इनोवेटिव आइडियाज रे आपणकर जहाँ भी फॉरेस्ट रिलेटेड जहाँ भी प्रॉब्लम्स अच्छी इनोवेशंस टेक्नोलॉजी रो हेल्प रे केमिति ताको सॉल्व करा जिवो, केमिति फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करा जिवो, केमिति डिफॉरेस्टेशन कमा जिवो ताको नेकी एथिरे माने ए वर्ष तार बहुत इंपोर्टेंट फोकस करा जायछि. दैट इज फॉरेस्ट सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करा जाओ थ्रू इनोवेशंस, थ्रू इनोवेशंस. ओके, एबे जिबा हमें नेक्स्ट रिपोर्ट को. तो हमें जिबा बे नेक्स्ट रिपोर्ट को. So next is another important report, that is Global Hunger Index 2024. सेरा गोटे important index आपणकर 2024 गोटे Global Hunger Index. मुझे भी कोई OS Prelims रे आपणकर usually multi dimensional poor वाला index हो, आपणकर environment related जहाँ भी आपणकर important index हो, and Global Hunger Index एगुड़ा को आपणकर OS रे बहुत probable अच्छी जे ए वाला index आपण आसीबो, and that too detailed statement रे और each statement आपणकर important. So first is a condition, the Global Hunger Index is prepared every year. So it is prepared every year, annually prepared hochi by an European NGO called Concern Worldwide and World Hunger Health. So gote European NGO अच्छी, that is Concern Worldwide and World Hunger Health, जोड़ा होची Wealth Hunger Life in Germany, सेरा आपणकर ताको कोन ताको सेरा आपणकर रिलीज करे, आपणकर प्रिपेयर करे. So it is prepared after assessing 4 parameters in different countries around the world. तो चारटा different parameter को नेकी सिद्रा assessment करे, and सिद्रे कौन दे ना जार GHI score बहुत कम थाए. Those countries which have low GHI score have low ranking, which means people that are less hungry. The GHI take confuse है बनी. Low GHI score meaning कि low rank अच्छी, लो रैंक अच्छे मीनिंग होची से माने लेस हंग्री, माने तमनंगर ग्लोबल हंगर जो ग्लोबल माने तमनंगर जो हंगर अच्छी सेटिके अधिक माने सेटिके भलो अच्छी कंडीशन तार भलो अच्छी. तो GHI स्कोर ऑफ ईच कंट्री इज कैलकुलेटेड ऑन 4 पैरामीटर्स ऑफ 3 डायमेंशंस. 3टा डायमेंशन अच्छी, तर 4टा पैरामीटर अच्छी. तो फर्स्ट डायमेंशन देखि दबा अंडर नरिशमेंट, इन्फेंट मोर्टालिटी एंड चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन. चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन को दिखा अच्छी और चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड स्टंटिंग. गोटे चाइल्ड वेस्टिंग आ गोटे चाइल्ड स्टंटिंग. तो 4टा पैरामीटर से 3टा डायमेंशन. सो इंडिया रैंक होची 105. सो आउट ऑफ 120 कंट्रीज इंडिया रैंक था 10105 मीन्स with a score of 27.3. the score होची 27.3 जोरा हाईलाइट करची serious hunger issues driven by ongoing challenges of food insecurity and malnutrition. So India ranked out of 127 countries 105 आपनगर अछि, just score 27.3. the serious hunger issues related to malnutrition and food insecurity issues जहाँ भी अपन related अछि ताकू नेकी अपना हंगर क्राइसिस बहुत सीरियस सिचुएशन रे अछि. So this is Global Hunger Index 2024. Okay. Next jiba our important index. So first index video रो जो first index हम देखिले that was Global MPI or Global Multi-Dimensional Poverty Index. Similarly हमर इंडिया रे भी गोटे पर्सनल गोटे निजर गोटे इंडेक्स रिलीज हुए, दैट इज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. सो सी जो ताको पुनी के रिलीज करे ना जो लास्ट हम जो वीडियो देखिले हमें एमपीआई रे आपनकर के रिलीज करे ना यूएनडीपी एंड ओपीएचआई रिलीज करे, बट नेशनल एमपीआई जो अछि ताको के रिलीज करछि ना आपन नीति आयोग रिलीज करछि. के रिलीज करछि नीति आयोग. एंड सी को मेथडोलॉजी फॉलो करछि
ना आपणकर ग्लोबल मेथोडोलॉजी रे जेंति आपणकर हेल्थ एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर जहाँ भी अपन नहीं एनालिसिस होची आपणकर मल्टी डायमेंशनल जो एनएमपीआई जो अच्छी एनएमपीआई जो अच्छी सी भी आपणकर ग्लोबल मेथोडोलॉजी को ही फॉलो करची से डायमेंशंस से पैरामीटर्स को ही नोची से देची लाइक द ग्लोबल एमपीआई India's national MPI has 3 equally weighted dimensions जोड़ा होची health, education and standard of living. So सेथिरे कोन होए ना आपनकर जो MPI अछि सेथिरे अपन तीनटा डायमेंशन अछि and 10टा आपनकर पैरामीटर्स अछि बट नेशनल MPI रे आपनकर तीनटा डायमेंशन अछि बट आपनकर दुटा एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स अछि माने 12टा इंडिकेटर्स अछंती दुटा एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स अछंती से दुटा एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स कोन गोटे हला मैटरनल हेल्थ और हला बैंक अकाउंट तो गोटे हला मैटरनल हेल्थ आ गोटे बैंक अकाउंट तो एनएमपीआई कैलकुलेट कला बेले आपण मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट को भी कंसीडर करा जाउची सो दैट बी कंफ्यूजिंग मन रखिबे एते तीनटा डायमेंशन 10टा पैरामीटर्स एते आपण तीनटा डायमेंशंस बट 12टा पैरामीटर्स डेटा पैरामीटर्स ऐड होईची गोटे हला मैटरनल हेल्थ आ गोटे हला बैंक अकाउंट एडा हला बैंक अकाउंट ओके सो आपणकर एमपीआई कैलकुलेट करिया पे समय दीटा कैलकुलेशन करंती टोटल H stands for head count ratio और A stands for intensity of poverty जो रिफ्लेक्ट करे कि केते शेयर ऑफ पीपल पॉवर्टी रे अछंती एंड टू फर्स्ट डिग्री दे आर डिप्राइव्ड एंड 4 डिग्री जाए से माने डिप्राइव अछंती तो फर्स्ट हला हेड काउंट रेशियो कौन दोची देखि देबा इट इंडिकेट्स proportion of multidimensionally poor in the population so केते proportion of लोक multidimensionally poor अछंती सेडा आपनकर हेड काउंट रेशियो माने हेड काउंट रेशियो रे आपण कैलकुलेट करा जाय सेम intensity of poverty it indicates average proportion of deprivation which is experienced by multidimensional poor individuals so सी कोन इंडिकेट करे ना केते proportion of लोक डिप्राइव अछंती जहाँ लगी से मल्टी डायमेंशनली पुअर अछंती से आपनकर इंटेंसिटी ऑफ पोवर्टी आपनकर कैलकुलेट करे सेम द नीति आयोग हैज रिलीज्ड अ डिस्कशन पेपर टाइटल्ड मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 and 6 stating that 24.8 crore people escaped multidimensional in the last 9 years so लास्ट भी ओएस प्रीलिम्स रे अपन देख पारे एमती ही क्वेश्चन आसला केते बिलियन ऑफ पीपल अपन एमपीआरएस के एस्केप हेतिले तो से इसे मेंशन करछि ना 24.82 करोड़ पीपल एस्केप्ड मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इन द लास्ट 9 इयर्स ओके नेक्स्ट जिबा में ता पर इंडेक्स को तो एडा अपन नीति आयोग मन रहला नेक्स्ट जीवा में आ गोटे इंपोर्टेंट इंडेक्स दैट इज एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 सो आपनकर द येल सेंटर आपनकर ऑर्गेनाइजेशन द येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड द कोलंबिया सेंटर for International Earth Science Information Network released the Environmental Performance Index for 2024. जरा आपनकर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी मन रखिए येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड द कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस रिलीज द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स फॉर 2024 सो से माने कोन से देखैछि जो ग्लोबल लेवल रे ग्लोबल सिनेरियो रे अपन इस्टोनिया जोड़ा अच्छी कंट्री से लीड्स द इंडेक्स को लीड करछि बाय रिड्यूसिंग इट्स ग्रीन हाउस एमिशंस बाय 59% तो 60% पाखापाखि आपनकर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को इस्टोनिया माने डिक्रीज करी रिड्यूस करी से आपनकर फर्स्ट पोजीशन को ऑक्युपाई करछि लीड्स द इंडेक्स एंड द रिपोर्ट सेज कि आपनकर इस्टोनिया फिनलैंड ग्रीस टिमोर लेस्टे एंड यूनाइटेड किंगडम जोड़ा आपनकर cut the GH emission the rate needed to reach net zero by 2050 तो से माने 2050 by 2050 से मानकर emission 0% है जीवो ताको ए रिपोर्ट क्लेम करछि
सो इंडिया रे पोजीशन केते अछि ना इंडिया रे पोजीशन अछि 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज माने इंडिया रे पोजीशंस बहुत ही लो अछि दैट इज 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज का ऊपर अछि इंडिया जस्ट चारटा कंट्री ऊपर अछि पाकिस्तान वियतनाम लाओस एंड म्यांमार ए चारटा कंट्री रो ऊपर ही इंडिया अछि बाकी सब जगह माने इंडिया रो परफॉर्मेंस ईपीआई इंडेक्स रे बहुत पुअर अछि इट परफॉर्म्स पुअरली इन केमती पुअरली हला ना एयर क्वालिटी हो एमिशंस हो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो सो सेथिरे आपनकर इंडिया रो कोन इंडिया रो लेवल माने इंडिया जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस टा कमी की जाइछि एंड मोस्टली heavy reliance on coal जो coal based industries and coal related जब बेस अपन coal रो जो extensive use लगी अपन ग्रीन हाउस गैस emissions and air pollution levels अपन इंडिया रे increase हेगी जाइछि अपन इंडिया रे increase हेगी जाइछि ओके so India specifically India ranks 177th in air quality and 172 in projected emissions तो overall report हला 176 बट यदि तार कैटेगरी रिपोर्ट देखिबे रैंक देखिबे तल एयर क्वालिटी 177 और एमिशन रे 172 एमिशन रे 172 तार रैंक अछि सो द 2024 EPI coverages perform indicators grouped into 11 issues with 3 policy objectives तो बहुत सारे इंडिकेटर्स इश्यू रिलेटेड 80 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अछंती एंड सेमानंगर मेन फोकस अछि एनवायरमेंटल हेल्थ इकोसिस्टम वाइटलिटी एंड क्लाइमेट चेंज तो ये रहा आपनकर मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडेक्स जहाँ आपनकर जो एबे ओएस प्रिलिम्स अछि आपनकर संडे दिन ताहा पे बहुत हेल्पफुल सो प्लीज ए वीडियो आपन देखंतु एंड प्लीज डिटेल स्टेटमेंट आपन पढंतु बिकॉज़ इज डिटेल स्टेटमेंट एनालिसिस आपनकर आसीबो जोड़ा आपन हेल्पफुल हबो जो रैंक मेंशन करा हबो तार डायमेंशंस तार आपनकर के रिलीज करछि थीम सब करा हबो आपण ए वीडियो देखिले आपण बहुत हेल्पफुल हबो एमती आगु बहुत सारे वीडियोस आसीबो आपनकर जोड़ा आपनकर ए जोड़ा आपनकर अपकमिंग जहाँ भी एग्जाम्स अछि ताकू रिलेटेड भी आपण एमती सारा बहुत सारा रिपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जे आसीबो यदि भल लागला आपण लाइक शेयर सब्सक्राइब करू हम चैनल को थैंक यू फॉर टुडेस वीडियो।